हमेशा ऐसी शख्सियत आती हैं कि जिन्होंने अपने करियर में ऐसी अचीवमेंट्स की होती हैं जो वाकई काबिल तारीफ होती हैं. प्रोफाउंड एक्टर्स ऑफ टेलीविजन. उमैर राना. Thank you very much. उमैर, कैसा लगा आपको अवार्ड हारते हुए मेरे से? ओह हाँ, मैं वो हारा था. जी. Yes, that's right. You are a spiritual person. किस टाइम पे आपने डिस्कवर किया? I was at the borderline of getting recruited for jihad. I was one of those जिसने बिदअत समझ के अपने भाई को सालगिरह नहीं विश की. मैंने जब गारे हेरा देखा, I just broke down. मेरे आखिरी नबी का पहली वही वो यहाँ थी. थिएटर आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है टेलीविजन पे अडैप्ट करना. What drove you to television? I was harassed into it by Adil Hashmi. वो literally घर आ गया तो उसने कहा था कि तुमने करना है, otherwise मैं अंडे मारूंगा तुम्हारे घर पे, शीशे तोड़ूंगा. कुल्लू बराए फरोख्त ना होता. There's a great probability I would never have come back to TV. I would have run away again. संगे माँ की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगा? First time ever in my life, I picked up the phone, I called Mustafa, मैंने कहा ये मस्तान सिंह मैंने करना है. For me, मस्तान सिंह was my rescue. The reason why I still wear this. हमारी हिस्ट्री रीरिटन हो रही है बुक्स में भी. हमारे रिलीजन से दूर किया जा रहा है. Aspirations हमारी जो है ना वो गलत होती है. हमने किबला अपना गलत कर. ऑफ स्क्रीन मैंने फ्लर्ट किया. हाँ किया. बेगम काउंट होती है इसमें? जी. उसके साथ भी किया. घंटी बज गई है. तो गड्डी तो नहीं आई बात? वो डाला तो नहीं पिया. तालियों ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू एक्सक्यूज़ मी विद अहमद अली बट. ऑफ कोर्स हमारे पास हमेशा ऐसी शख्सियत आती हैं कि जिन्होंने अपने करियर में ऐसी अचीवमेंट्स की होती हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ होती हैं. आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने करियर के अंदर ना सिर्फ आइकॉनिक रोल्स किए हैं बल्कि करियर डिफाइनिंग रोल्स भी किए हैं. एजुकेशन से तो उनका ताल्लुक था ही. हम्बल बिगनिंग्स फ्रॉम थिएटर एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट profound actors of television in Pakistan. Ladies and gentlemen, please आपकी भरपूर तालियों में welcome उमैर राना. Thank you very much. आप समझ रहे थे मैं आपकी बेइज्जती करूंगा. मैं कौन सा पहला पॉइंट था कि हम लोग हमेशा ऐसे मेहमान लाए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन आज एक्सेप्शन है. I half expected that. जी. तो उमैर, कैसा लगा आपको अवार्ड हारते हुए मेरे से? ओह हाँ, मैं वो हारा था. जी. Yes, that's right. Anyway, तो उमैर वेलकम. आज आपने वाइट शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपको. थैंक यू. आपको भी. थैंक यू. माशाल्लाह, वी ऑल वेरी वाइट. वेरी वाइट इंडीड. रेसिस्ट हम हैं. रिवर्स. बिल्कुल. उमैर साहब, आपने थिएटर से स्टार्ट किया. जी. क्यों? किसी ने आपको टेलीविजन में कास्ट पहले क्यों नहीं किया? आप गुड लुकिंग मैन हैं, आपके बाल भी चिट्टे हो गए. टेंशन से, परेशानी से? बहुत ज़्यादा जनरेशनल ट्रॉमा. ओह एक्चुअली. पर थिएटर पे जगह मिल गई. आपको तो उस उम्र में आप जगह ढूंढ रहे होते हैं. हाँ. तो थिएटर पे जगह मिली थी. तो और भी जगहें थी मगर आप वहाँ नहीं गए. नहीं, वो अवेलेबल नहीं थी. Anyway, Omair, welcome to the show, यार. Nice to be Thank you so much for taking time out. I'm so glad. I have to put this down and say I'm so glad that I finally got here. And let this be known that the gentleman's been very graciously inviting me and chasing me. कितने महीने? यार सर्दियाँ थी. मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अब गर्मियाँ आ गई हैं. अगर मैं किसी लड़की को इतना चेस कर रहा होता तो दूसरी शादी हो गई होती. Yes, well. बेगम ऑफ स्क्रीन बैठी है तो I will condemn this. अच्छा, let's start by your education. You belong to the education sector. आपने टीचिंग बड़ी की है. तो टीचिंग की तरफ से मैं तो आपको थिएटर के ज़माने से जानता हूँ, लेकिन ये टीचिंग कब से आपके लाइफ में आई? और डिड यू प्लान कि हाँ यार मैंने टीचिंग में ही आना है? आई डिड एक्चुअली, लेकिन मेरा था कि इवेंचुअली टीचिंग में आना है. सो आई थॉट कि ठीक है, मैं आई गो टू द रन ऑफ द मिल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिग्री, फिर कोई MBA करेंगे, फिर साबुन तेल बेचेंगे, और फिर उसके बाद लाइफ, उसके बाद फिर एजुकेशन में आना है. आई रियली वांटेड टू, बट एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत था. मैंने कहा नहीं, पहले आप एजुकेशन में आए. एंड देन आई गॉट टू दैट फर्स्ट एंड रिवर्स्ड इट. Now I've left teaching for what, 7-8 years? 7-8 years? 8 years maybe, yeah. But did you find teaching fulfilling? Oh, superbly. It is so fulfilling. I think मुझे हमेशा लगता था कि acting on stage was the most fulfilling thing. फिर एक पहला moment था when I directed these 4-5 kids back then, now young men and women. Young me, I'm being generous with them now. So सर काफी बूढ़े हैं आप. ठीक है. उनको जब दाद मिली ना, तो I tell you that's the first time मुझे याद आई कि मेरे वालिदैन ने हमें कहा था कि जब तुम लोगों की तारीफ होती है हमें ज़्यादा खुशी मिलती है. I never truly appreciated that, but I felt like a parent. I felt like, oh my God, this is a greater kick, a greater high. तो फिर I enjoyed that more. And when I started teaching, nothing, and I speak on behalf of all teachers,
There's no feeling that can replace once you've come out of a class, of a good class. And frankly, as bad, if you come out of a bad class, you can really, really suck your soul out. So it is very fulfilling. At the same time, it can be very painful. Financially. Oh, हाँ, financially तो है ही है. Financial तो consideration मैं कर ही नहीं रहा. But painful also, soul sucking. It really can. Yeah. How? मतलब soul sucking as in मतलब stressful ज़्यादा होता है. बहुत stress होता है. But you see, there are various ways of it. One, yes, there is the financial, practical aspect of it. Two, आप अगर aspiration लिए लेके जाते हैं कि I want to make the difference in the world, then why आहिस्ता ज़रा curtail होता है. And then you're like, hold on, even if I've made one child's life better, and I think that's genuinely a great cause. But if you don't do a good class, if you don't get a nice class to deliver, one day you've gone into a class and come out, I'm like, yaar, maza nahi aaya aaj. It is really frustrating. It's like you've really prepared for a role and you've gone for that one take and you're not satisfied with that take at all. आपको लगता है आपने risk हला लिया. But the difference is कि teaching में आपको लगता है कि यार there was direct service to these children and I haven't been able to serve them. Act में कि चलो एक सीन मैंने अच्छा नहीं किया ना, नेक्स्ट सीन में मैं पक्का कर लूँगा. So it can be really soul sucking in many ways. आपको लगता है हमारे यहाँ टीचर्स एक्सप्लॉइट होते हैं? Oh heck yes. And some of them exploit the system. Because education since when we started has now completely been corrupted in the sense कि अब वो पहले ये था कि आप सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं. हाँ. अब buyer seller relationship है. So when you and I go to a parent-teacher conference generally to private schools, you feel like I've just ended up in, one of the fast food restaurants. And, हाँ, बिल्कुल. Yeah, are you satisfied with our services? नहीं आपके बच्चे से हमें कोई शिकायत नहीं है. प्लीज हमारा अपना बच्चा प्लीज यहाँ से ना आपके सबके बच्चे अच्छे कर रहे हैं. बहुत अच्छे. किसी को प्लीज यहाँ से ना निकाला. हमें फीसें चाहिए, उनकी फीसेस चाहिए उनकी. So it's a buyer-seller relationship because of which the greater cause gets compromised. So हम जो कि फिर भी वो अलमदार बनने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, we get even more soul sucking in that end. We do actually. We actually do. Because then I got into consultancy and I got into education consultancy as well. तो मैंने तो दावा उनको यही कहा था कि I would put my child in a school which has expelled a child on serious disciplinary issues. वो तो अब हम लोग सुनते भी नहीं हैं. आपको पता है कि अभी पिछले दिनों स्कूल्स के अंदर किड्स वर हैविंग वेपन्स, ड्रग्स, और ये तब इतना आम हो गया कि हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों के अंदर ड्रग्स इतनी कॉमन हो चुकी हुई हैं. डू यू थिंक दैट्स हैज़ टू डू अ लॉट विद द सोशल प्रेशर? Yeah, absolutely. I think हम लोग देखिए, first of all, we have to also realize अब जो बच्चे हैं यानी कि हमारी जनरेशन के बच्चे हैं. So there's something wrong that we need to reflect on ourselves as well. बिल्कुल. We can't pass it down to the kids. द पेरेंट काउंसलिंग का तो यहाँ हिसाब ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. और पेरेंट बिल्कुल अब कस्टमर कंज्यूमर की तरह आते हैं. Of all the work that I've done in education, getting the faculty in, the non-teaching staff in, the students involved, engaging the principals and the heads is all fine. Getting the parents involved has always been a tackle, which means that the parents are not invested in the betterment of this system. They don't consider themselves part of the collaborative system. That's the challenge. Add on to this. They have their own world, they have their own life, they want to have this newfound freedom as parents do. बच्चों का क्या है? बच्चों के पास एक्सेस जो आ गए on all those the pressure, सोशल मीडिया, यूट्यूब. पहले तो यार हमारे क्लास के बच्चों की पीयर प्रेशर थे ना कि यार ओदे कोल गड्डी आ गई, ओदे कोल ओ कैलकुलेटर नवा लेके आया जी. Now it's the world on your palm and it's all about impressions. It's all about perception. It's not about the real thing as well. Our generation still thinks this is the real world. For them, that is the real world. And it seeps into बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया रियलिटी से, तो completely gone. The other two issues that have happened, in my opinion, एक मेरा ये कि यारी दोस्ती खत्म हो रही है. You don't have counseling from buddies. हम लोग के कोई रौले रप्पे कोई भी होते थे, we would go to a friend. हाँ. Now चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मगर आप दोस्त के अंदर कन्फाइड करते थे. हाँ, something, right? So there's some sort of counseling that is happening at some level before it goes to anyone else like बड़े चाचा मामू या अम्मी अब्बू. So it's always amongst friends. अब वो उस तरह की नहीं है. Now it's all cyber. Now it's all this virtual thing and it's not the real tangible friend that you access to. So you've got all these friends that you are following, you and you're following, but it's not the real thing. The other thing that I feel is the question of spirituality has gone down. I'm really throwing it out there. प्लीज मैं इस चीज़ के ऊपर पहले भी बोल रहा हूँ कि हम लोग तो अपने रिलीजन से इस तरह भागते हैं कि जिन्हें पता नहीं कि कोई कोविड आ गया. Yeah. Uncool हो गया ना. हाँ जी. Uncool हो गया. But I think in any form of spirituality,
it is now diminishing. Why? Well, influence of the Western progression, which, mind you, they're going to find spirituality back again. और फिर हम 2-2, 4-4 कदम पीछे होते हैं. बिल्कुल. Secondly, it is just uncool with the group that has come about. 3, we have not done good enough a job. हमें नहीं अंदाजा how to articulate to our children कि यार why spirituality? What is spirituality? उसमें benefit क्या है तुम्हारा? You know, we haven't been able to articulate well enough. We've been that generation which has questioned so much, not found the answers. All of us. Some have found it later. You know what I'm saying? So the kids need that kind of spirituality as well. Excuse me, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, I have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, Lahore Entertainment City. A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स को जो फंडिंग मिलती है, और बहुत से स्कूल्स को फॉरेन फंडिंग आती है, और उसके अंदर एक बड़ा क्लियर एजेंडा ड्रिवन आपको खुद नजर आ रहा है, हमारी हिस्ट्री री रिटन हो रही है बुक्स में भी. Do you think that has to do, or especially elite schools के अंदर, कि हमारे रिलीजन से दूर किया जा रहा है? I can't comment on if it's done deliberately. I mean, let's say if you've got one of the major things is Cambridge है ना, CIE में इस्लामियात है. So इस्लामियात का जो भी सिलेबस पढ़ने तकरीबन वैसे ही जैसे हमारे ज़माने में था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. तो फिर डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? I don't think it's being done deliberately that way. I don't think it's by design. I think aspirations हमारी जो है ना वो गलत हो गई. हमने किबला अपना गलत कर दिया. And I don't mean it, and I mean it by pun, but I don't mean it कि सिर्फ इस्लाम ही. I mean any form of spirituality. इस खत्ते में Sufism was spirituality. If anyone's a Christian, there's spirituality. सिख की है, सिख ही है. I mean इस खत्ते में तो इतने हैं. और इतना लिटरेचर है उनका. और बहुत लिटरेचर. और नोट करना कि सबकी wisdom एक जैसी है. They all come down to the same thing, which even Avatar would show you on your screens, right? Yeah. It's all about the oneness of the great force. And science is now starting to rediscover that. Because let's just put it this way. If science was doing so great, which it is, and we should accept that language, but it's not a replacement of everything. अगर स्पिरिचुअलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अगर इंडिविजुअलिज्म इतना अच्छा था जो कि अब नॉर्म बन गया, क्योंकि वो हमारा कलेक्टिविज्म कम हो रहा है, मोहल्लेदारी कम हो रही है, रिश्तेदारी कम हो रही है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अच्छा था, तो हमारी जनरेशन शुड बी फ्लरिशिंग, राइट? द नेक्स्ट जनरेशन. बिल्कुल. Then why is it that drug use is increased? Why is it that suicide is increased? It's because they are becoming a little more aloof and individual. They need to become a little more collaborative with people. यार एक दूसरे के it takes a village to raise a child. Yeah. We had a village when we were being raised. Now we're getting into atomized small bits and pieces, including my own self. हाँ. अब तो हम लोग अपने हमसाए से भी नहीं बात करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार नहीं किसी ने ना दसो ये थे रहने. I mean वो पहले तो अंडे लेने जाते थे, वहाँ छुपन छुपाई के लिए वहाँ छुप जाते थे. That's how it used to be, and everyone knew कि यार शेखों का पुत्र आया जी, और राणा साहब का पुत्र आया, चौधरी का पुत्र आया. So and they would take care of each other. अच्छा बुरा हर तरफ से, बट एटलीस्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिविटी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो हम लोग इंडिविजुअलिज्म में चले गए हैं, हम एस्पिरेशंस हमारी वो वेस्टर्न, हर वेस्टर्न चीज़ बुरी नहीं, बट आई मीन जनरली वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म उस पर चले गए, away from spirituality, too busy not doing much, dumbing ourselves out by questionable information, let alone knowledge and wisdom, because information is the bottom of the three. हम तो इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्वेश्चन. क्या आपको ज़रूरत इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की? मैं कल अभी वासे से ही बात कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की थी. उसने कहा था यार हम लोगों को वाकई क्या इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जितनी हमें बम्बार्ड की जा रही है कि भाई मुझे नहीं मतलब ज़रूरत कि भाई तुम आज जाके ट्रैफिक में फंसे थे. हर चीज़ तो हम लोग पब्लिसाइज करते थे कि ऐ देखो जी ऐ हो रही है, हर चीज़ तो हम लोग अपनी पब्लिसाइज कर रहे होते हैं. लेकिन ये लोगों के इत्तला में डाल दूं, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैवलरी ग्राउंड पे ठीक ठाक कोई काम हो रहा है, मुझे आज पता चला है. बड़ी पैड़ी तरह पता चला है, इन्फॉर्मेशन दे दें तो मैंने फ़ायदा हो जाता. बट यू राइट, आई मीन देयर इज एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन. I think this generation will now start renegotiating. This is my prophecy. They will say, okay, fine, do I need that information? If I do, then I can ask. But I don't need to constantly seek random information, you know? Because अब साथ लोग are even questioning information. हाँ, और देखिए information का वैलिडिटी इन्फॉर्मेशन की हमारे पास नहीं है. हमें ये नहीं पता कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है. बट क्योंकि एकदम आ गया कि जी वहाँ बम फट गया, अच्छा जी हमने मान लिया. अब ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ थी वो.
3 या 5 घंटे बाद हमें पता लगता है अच्छा यार वो फेक न्यूज़ थी, Yeah. मैं बाय द टाइम उसने अपना काम कर लिया होता है. And we take decisions accordingly. Yeah. This is another issue that we've had now. I mean, even if you've got information, why are you acting upon it without validating it? Why do we do that? Because it's question about who's first now. Exactly. So, yani ki bottom line kya hai? And again, coming back to our kids, this is the particular age where they seek significance. Everyone seeks significance. When they want to seek significance, they'll be able to seek it in any way and manner that they can. Unless we've put the guardrails कि यार ये values हैं तुम्हारे, इसके हिसाब से इसको cross ना करना. Yeah. Significance seek करने के लिए. And one of them is patience. Take a breath. Now it's like यार who got it out first? मैंने सबसे पहले अफसोस किया मोइन अख्तर साहब की वफात का. उमर अख्तर साहब ने कहा यार मैं तो जूना. या फिर अभी रिसेंटली कौन सा था एक अदनान सिद्दीकी साहब अदनान, राइट? या बड़ा अफसोस हुआ अदनान का मैसेज सुन के. वो तो शुक्र है उन्होंने खुद वीडियो बना I के love दिया. that. तो मरहूम बड़े अच्छे थे. अच्छा शुक्र है मैं भी नहीं कहते अगेन ऑनेस्ट मैन, ये नहीं कहा कि नेक थे. आई एम सो ग्लैड दैट ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन. नहीं हम जानते हैं कि अदनान कहीं से नेक नहीं है, वो फेक हो सकते, नेक नहीं हो सकते. We love you. Yeah, he came on the show. Yeah, but again, oh, he did? Yeah, in a see-through shirt, of course. He's also very transparent, right? Yes. Of course. Yes. Asha, you are a spiritual person. I'd like to associate myself, yes. किस टाइम पे आपने डिस्कवर किया? What was it after your children? No, yeah, I think for me it was an up and down. I was rediscovering myself as a young teenage boy, और मैं एक extreme version of Islam का चला गया था. I was at the borderline of getting recruited for jihad. Yeah, I was one of those जिसने बिदत समझ के अपने भाई को सालगिरह नहीं wish की, you know that kind. Oh, अच्छा. This was the time that you actually went, मतलब कोई 3-4 साल के लिए you weren't in the limelight at all. No, this is way early. This is, I think, मैं मेरे भाई और अम्मी had moved to Lahore and we were living in Iqbal Town. My father was alone in a lane with his teenage angst and whatnot. और उसमें Oways चला गया था London, I think, around about that time. So it must be around, I don't know. How many brothers and sisters are you? It's just the two of us. Okay. तो Oways मुझसे बड़ा है. तो हम और मुझे तसल्ली नहीं हुई थी. I was like, yeah, I didn't wish my brother a birthday. Why am I not feeling happy about it? You know, so I was like, to hell with it. I have to review it. So momentarily, I left all religion, which in hindsight was a good thing. अच्छा. फिर मैंने जैसे मैंने कहा हमारे खित्ते में इतने मज़ाहिब और दीन और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो मैंने कहा यार इनको पढ़ते हैं तो सही. सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग इट एज अ स्टूडेंट. जैनिज़्म पढ़ा, जूडाइज़्म पढ़ा, सिखी पढ़ी, बुद्धिज़्म पढ़ा, सब पढ़ा. एंड वो क्या कहते हैं भगवद गीता पढ़ा. एंड समथिंग अबाउट इस्लाम कॉल्ड मी बैक इन, एंड दैट वाज अगेन हाउ यू ऑलवेज पुट ह्यूमंस एंड अदर्स बिफोर इवन गॉड. दैट आई थिंक वो सिरा था धागे का. कितनी खूबसूरत बात है कि आप और हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि अपने रिलीजन को स्टडी करो. एंड आई थिंक यू ओनली बिकम अ ट्रू मुस्लिम इफ यू एक्चुअली स्टडी योर रिलीजन एंड यू फाइंड आउट कि हाँ ये क्यों है. और हम लोग बड़ा इस चीज़ को लेबल कर देते हैं कि यार सवाल नहीं पूछना. हालांकि कहा है भाई सवाल पूछो. अगर आपने गाड़ी चलानी तो आप पूछेंगे भाई ब्रेक कितने गई है, रेस कितने गई, मैं गड्डी किमें चलाऊँ. और यहाँ हम लोग उसको नहीं सवाल नहीं पूछना. But you know that was one of the things that caught me again, क्योंकि मुझे सभी कहते सवाल ना पूछो, you know, so blind obedience. मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये थी कि जब अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई मैंने इसको बनाया इसके सजदा करो, तो फरिश्ते ने पूछा क्यों. So that's the first registered question I caught in the Quran. And instead of God saying, how dare you ask me the question? He answered it. I'm like, oh, okay, so inquiry is encouraged by God. बिल्कुल. So खुदा ने अगर फरिश्ते को जिसको who has no right to ask, उसने पूछा, he still answered. So it means I should ask as well. बिल्कुल. And my learning has been, यार अहमद, if you genuinely दिल से अगर आप सवाल पूछो ना किसी भी चीज़ का, you find the answer sooner or later. This is my genuine belief. कि अगर आप दिल से पूछे ना, sooner or later एक अजीब जगह से आपको जवाब उसका मिल जाता है. And this is again the spiritual universe I believe in. But मेरा जो actual massive take off हुआ था ना of spiritualism was when I went for Hajj. But again, I was not. Mashallah. Alhamdulillah. But I was like taking Ammi for Hajj, or I accompanied Ammi for Hajj. So I was not the uber. Massively in love with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that I was. मैं पहले दिन हज करने के बाद I
आई लाइक टू जस्ट लूज माई सेल्फ इन अ सिटी. चप्पल पहने, जूते पहने, जस्ट वॉक, जस्ट गेट लॉस्ट. अब अरबी आती थी, मैं फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं निकल पड़ा. चप्पल पहनी थी मैंने. उस वक्त मेरे घुटनों के ठीक ठाक इश्यूज थे. आई वाज आस्क्ड नॉट टू क्लाइंब स्टेयर्स, नॉट टू स्क्वाट, नमाज बैठ के पढ़ें, ज़मीन पे नहीं. इट वाज दैट बैड. तो मैं चलते मैं कहा यार ये पहाड़ दिखा लग रहा है, अच्छा ये जबल नूर होगा. आई रीच्ड ऑल द वे टू जबल नूर. फिर मैं कहा सामने खड़ा हूं, ऊपर है खारी हिरा, ऊपर है, एज एन एडवेंचर. तो मैं कहा चलो लेट मी ट्राई हाउ फार आई कैन गो. एंड आई क्लाइंब्ड एंड आई केप्ट गोइंग. देयर वाज नथिंग, नो पेन. अच्छा ओके. एंड आई वेंट ऑल द वे अप. और मैंने जब खारी हिरा देखा, आई जस्ट ब्रोक डाउन. आई कंप्लीटली ब्रोक डाउन. एंड इंस्टेंटली मुझे जो चीज़ें आ रही थी माइंड में कि यार मेरे आखिरी नबी को पहली वही वो यहाँ थी. अगर मेरे ऊपर ये कैफियत तारी हो रही है तो उनके ऊपर और सारी अंबिया पे क्या कैफियत तारी हुई होगी यार. और वो पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, which essentially means learn. But for me, it unpacked so much more. It meant have courage, ask, seek. It meant, move from somewhere where you're comfortable to somewhere where you're uncomfortable. Learning is that, right? Yeah. Grow. और मैं कहा यार हम यही तो नहीं कर रहे. और मैं इकरा का विरद करता हुआ नीचे आया. एंड अगेन अ मिरेकल कि मेरे घुटनों में कोई मसला ही नहीं. अरे वाह. So I was like, okay. And that for me, I think was a massive kick that I got on spirituality. That particular moment and then on. So it just kept rolling. And I kind of saw the universal belief of us, all of us ourselves together. So even, for example, जब हम मस्तान सिंह हम बात करते हो फिर. बिल्कुल. So when I rediscovered Sikhi, I found the common grounds. I could now go back and say, okay, I can find common grounds in all of these faiths. I can find it. But I choose. Because you felt it, you discovered it. I felt I discovered it. But I choose this, क्या बात. ये मेरी choice है. So आगे अल्लाह को जो मंजूर. क्या बात है जी, वाह. थिएटर की जर्नी आपकी जिंदगी में आई. थिएटर, डिड यू ऑलवेज न्यू एज अ किड कि यू हैड दैट अटेंशन? क्योंकि हर बच्चे के अंदर अटेंशन सीकिंग वाला होता है, लेकिन बहुत से बच्चे आर, बल्कि 80-90% आर वेरी शाय ऑन पब्लिक फोरम्स. व्हाट age did you discover कि okay यार, this is something I'm comfortable with? I always wanted to. I was superbly shy. I was a bullied child. अच्छा. Bullied child. I was superbly shy. हमारे अलाइन में स्कूल में द प्रिंसिपल जो थे मिस्टर क्रॉफर्ड, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उनका फोर्स होता था कि हर जुमेरात को जुमेरातें होती है ना हमारी. हाँ उस टाइम पे जुमेरात होती थी. याद है? जुम्मा छुट्टी होती थी. जुमेरात को दिल बी सम स्केच और स्किट डन बाय सम क्लास. अच्छा. वो जबरदस्ती था. वो आई यूज्ड टू किल मी. आई वाज लाइक आई मीन आई हैव टू डू दिस. सो वी डिड इट. दुबई चला गया तो आई वाज पिक्ड अप बाय my mentor who aspired me to become a teacher, Kelvin Catesby. So Mr. Catesby pulled me up. I saw you do a free dance somewhere. I want you part of this play that we're doing. आइटम सॉन्ग तो नहीं था? नहीं, आइटम कहाँ है यार. That's only for Adnan with his see-through t-shirts. Unless he poured a bucket of water on me right now. But we did that. Then I went to Dubai College और वहाँ ड्रामा क्लासेस बाकायदा होती थी. So I used to look forward to, again Thursday को होती थी. I used to look forward to that. जब पाकिस्तान आए, again एक massive cultural shock. कितनी एज में थे आप जब वापस? 13 around that time. So it was a massive cultural shock. हाँ. जब मैं आया और यहाँ फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझ पे तारी हुआ. मैंने कोई असेंबली में कुछ खुद पोइट्री लिख के पढ़ दी तो दाद मिल गई. प्रिंसिपल ने सबने देख लिया. छोटा स्कूल था ब्लूमफील्ड हॉल. तो उन्होंने कहा कि इसको डिबेट्स के लिए भेजना है तो तकरीर तैयार करो, कि इसको ड्रामे के लिए तैयार करो. इंटरेस्टिंग. हियर्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरा बड़ा भाई, उसको हम DPA कहते थे. ओके. दिल फेंक आशिक. हाँ. सो राणा साहब बड़े जड़े से ना बहुत इश्क होता सी. प्यार हो गया. तो एक एनुअल प्ले हो रहा था मैकबेथ, और उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी उस वक्त, तो राणा साहब का उन पर दिल आया था उस वक्त. तो मैकबेथ जो प्ले कर रहा था वो रास्ते की हड्डी था. सो एज मैकबेथ वुड गो तो वो हड्डी हटा. तो हमारी अगेन वन ऑफ माई मेंटर्स मिस रुबीना सहगल, गॉड ब्लेस हर सोल, तो उन्होंने कहा कि हमें वी नीड अ मैकबेथ. तो राणा साहब ने कहा आई विल बी मैकबेथ. ओए क्या एंट्री मारी ना भाई ने. तो उन्होंने कहा अच्छा बट यू आर प्लेइंग द सर्वेंट्स रोल. तो सर्वेंट कहाँ से आएगा? पंजाब फारसी में कहते हैं सग नाबाश बरादर खुर नाबाश, सग बाश बरादर खुर नाबाश, कि बंदा कुत्ता हो जाए, छोटा पुराना हो गए. तो ना सर्वेंट चाहिए, कोई मसला नहीं है. उमैर कल से तुम सर्वेंट हो, कम टू रिहर्सल्स. मैं कहा अच्छा नहीं बस हो.
तो खैर मुझे क्या पता उसकी बड़ी स्कीम क्या थी, तो चला गया एज अ सर्वेंट रोल, भाई ने गाया, अगेन बुलीड, जाने. बिल्कुल. Miss Rubina Seigel spotted something in me. I have no clue what it was. She got me into multiple roles and she got me become an assistant director in class 8. Right? A levels, O-levels के senior बच्चों का play. And then she got me in another play. And then she helped me with debates and she got me in another play. वहाँ से कीड़ा लगा. अच्छा. And then I was like, all right, I think I can do this. People are appreciating me. And me, who was again seeking attention, found that attention. तो फिर मैंने थिएटर ही किया, थिएटर ही करना और डिबेट्स ही किए, थैंक्स टू ओवेस एंड हिज दिल फेंक आशिकनेस. सर देखें ना, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और ऐसा अजाब हमारे पे नाजिल हो गया. यस यस. So I attribute my acting career to the love of my brother. Yeah. वो बच्ची फंसी कि नहीं? नहीं, ओ यार, exactly. मैं फंस गया हूँ. अच्छा, उसके बाद आपने थिएटर किया और लाहौर के अंदर थिएटर सीन बड़ा उस टाइम पे हाइप अप हो रहा था. आई वाज डूइंग थिएटर दैट टाइम, और एक नई पौध आ रही थी थिएटर की. और एक क्योंकि हमारा कमर्शियल थिएटर तो हमेशा ही सही था, लेकिन ये इंग्लिश थिएटर और ये पढ़ा लिखा जो कहते हैं थिएटर, ये आना शुरू हुआ था. एट दैट टाइम डिड यू रियलाइज कि यार दिस कैन मटेरियलाइज इनटू अ लॉन्ग करियर? Not entirely. हमने तो शौक के तौर पे करा. Not entirely. Partially, not entirely. कोई ambition नहीं था. यार मैं हमेशा कटी पतंग रहा हूँ अभी भी. I honestly don't know what my future is going. I've never planned it, never worked towards it. मज़ा आ रहा था, ये था कि enjoyed it, and those are great times. Those are amazing times. यार इस weekend पे कौन play कर रहा है हमरा में, let's go. टिकट कहाँ से मिलेंगी? 200-300 रुपए की टिकट हम खरीदते थे, याद है? And go each other's plays, and it was so much fun. But I never thought of it. I don't think I planned कि हाँ मैंने acting as a career बना दे. वो भी again अल्लाह की तरफ से हुआ था, because I was about to get married. I'd graduated. I joined Habib Rafiq Technologies for 2 years or so. It was miserable times of my life. उसमें भी मैंने 2 plays किए थे शराबील के साथ. That's so. मैं भी वही आने लगा था कि राना एक अच्छा बच्चा था, रोज स्कूल जाया करता था. अचानक शराबील की नजर उस पर पड़ी. और शाकाल ने कहा नहीं, शराबील, I think he contributed to Lahore theatre. Of course, big time. He discovered Hamza. He discovered Obi. He discovered अपना गौहर. That's true. That's true. All these people. Yeah, they've all come through the same stage. That's true. But खैर, even वासे ने शराबील की लाइट्स की हुई हैं. उसने कहा था. Right, he did. मुझे याद है वो. I think I was the only one जो उसका competition में था दूसरी तरफ से. चका. You were never touched. सर नहीं, I was never touched in any way. Okay. क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई कास्ट नहीं करता था ना, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं खुद ही कर दूँ. मैं खुद ही करूँगा. And I'm glad you did that. Yeah, exactly. I remember those times, man. It was good times. It was good fun times. Yeah. Television. Yeah. And very humble beginnings. कोई इतना एकदम नहीं हुआ ओवरनाइट सक्सेस हो गया. और ड्रामा, उस टाइम पे ड्रामे लाहौर में कम हो रहे होते थे. अब तो पूरे ही आपको पता है लाहौर और कराची का एक वो जो कॉन्ट्रास्ट हो गया कि अगर ड्रामा करना है तो आपको कराची में होना पड़ेगा. टेलीविजन और स्पेशली थिएटर आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है टेलीविजन पे अडेप्ट करना और एडजस्ट करना. What drove you to television? Well, I was harassed into it by Adil Hashmi. वो लिटरली घर आ गया तो उसने कहा था कि तुमने करना है तो वैसे मंडे मारूंगा तुम्हारे घर पे, शीशे तोड़ूंगा. So you have to do 3/3. So he saw me on stage. तो फिर मैं said okay fine, okay. और उस समय सिटकॉम का एक बड़ा बूम आया हुआ. कमाल बूम था यार. We had some good times. I had a very difficult time. I found it very difficult to adjust. But I think it's not because I was a theatre person only. It was again the person who I was. I needed, again, the insecure, bullied child has always been around. तो वो बहुत था. I could not throw my weight. I'd never felt confident and comfortable. Never. Even on screen? Never, ever. It took me a very long time. बहुत अरसा लगा मुझे. I think if you ask me if my career, first ever TV work was 2001, 2002 maybe? Yeah. ये 3/3. उसके बाद से अब we're in 23. I would say maybe in the last 10 years. That's when I started feeling comfortable. Not before that. Not at all. Did you, क्योंकि मेरे करियर में काफ़ी mentors आए who helped me through my struggle. और I do believe that I have a split personality in me.
मैं स्टेज पे कुछ और होता हूँ, मैं रियल लाइफ में कुछ और होता हूँ, मेरी बीवी इसकी गवाह भी है. बट आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल टू बी समवन एल्स. मेरी इनसिक्योरिटीज़ को मैंने हमेशा से स्क्रीन पे आई फाउंड इट कि ओके दिस इज नॉट अहमद, दिस इज समवन एल्स, एंड आई फाउंड इट टू बी माई सेफ स्पेस. आई कैन रिलेट टू दैट. लेकिन वो मेरे लिए थिएटर में था. अच्छा. क्योंकि उसमें क्लोज स्पेस है, वही लोग हैं, हार्मनी बनती है, बार बार करना पड़ता है. सो दैट वाज माय होम, दैट वाज माय कंफर्ट जोन. TV में it wasn't. TV में was like ठक ठक ठक, let's get going, you know, ये एक्शन चला. और फिर सिटकॉम, you know how it was, right? ये लाइन लगे, 3 कैमरा लगा, रोल. और उस वक्त जब गर्मी भी होती थी, ऐसे पंखे सब बंद करो, and you gotta keep going, just keep going. 2 दिन के अंदर हमने पूरा एपिसोड बनाना है, 1 दिन में एक एपिसोड निकालना है, जो भी. So I did not feel super confident and comfortable there. हालांकि they were lovely people. I was with Faisal and Adil, you know, lovely people. It's great times that we had back in those days. So it was all good, but so who became your mentor at that time? I didn't get one. You didn't get one? I personally didn't feel like I got one. Because for me, मुझे क्या चाहिए था mentors में? मुझे mentor में चाहिए था someone who's like, it's all right, I can see you're panicking. No one came forward to do that. वही था कि स्विमिंग के लिए फेंक दो, आप ही तैरेगा. Yeah, pretty ironic because that's how my father tried to teach me swimming and I drowned. That is a true story. That's the worst thing you can do actually. Worst thing you can do. And अगर कोई आते थे तो फिर वो क्योंकि अब देसी तो हो गए थे. और ऐसा तरह नहीं होता है कि फिक्की एक्टिंग कर रहे हैं. जुमला पहचान लिया आपने, किसने कहा होगा कि फिक्की एक्टिंग कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं, वो बंदा फिर जरा द चाइल्ड इनसाइड मी वेंट फर्दर बैक. बट आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ देन आई लेफ्ट टीवी. आई लेफ्ट टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें फिर एजुकेशन में गया, थिएटर प्रोडक्शंस बहुत किए, डायरेक्ट बहुत किया. एंड देन आई थिंक जब हमने 3 फिल्म्स किए थे, चमेली, तमन्ना एंड दुख्तर, उसके बाद Kashif Nisar got me back in. And if in any way, if you want me to associate my first mentor, I would say Kashif would be it. Achha. Because he gave me, he wasn't over directing me. He was comfortable. He made me the space comfortable for me. Agar Kashif na hota wo, aur wo Ulu Barai Farokh na hota, there's a great probability I would never have come back to TV. I would have run away again. Did the script attract you? Oh, amazing script. Yeah. Kya script thi? Yeah. I think the treatment was so unapologetic, as always. Ahmad on one side, Aman Ijaz on the other side. And that's the first time I started to appreciate Saba's work. उससे पहले I'd never liked her work. But I think Ullu में मैंने थोड़ा सा because Sabah has a very intimidating personality. She commands attention. True. I mean, but I think I've seen Sabah evolve in patches. And there's something I say to her as well, that the kind of evolution of her, not as an individual alone, but as an actress, is phenomenal. Yeah. वो पहला वाला मुझे याद है, बस वो मॉर्निंग करके यूं बाल, मॉर्निंग करके यूं बाल, commercial वाले. Total commercial. Till the last time I worked with, I'm working with her again now, but the last time I worked with her in Kamli. और एक moment था यार, it was so non-Sabah for her to be sitting in front of Nimra Bucha. No lines, just watching her. And I was like in awe, कि यार ये क्या expression दी इसने. I mean, I commend Nimra to give her that impetus as well, and Sarma to direct. But the arc. But Ullu में यही था. The team was great, the script was great, the character was great, and Kashif was great. Kashif ने मुझे space दी, मैंने कहा अच्छा, I think I can do it again. चलो maybe one more. Maybe one more. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ. You got married early? Yes. और way early. हम एक्टर्स का एक बड़ा होता है कि हम लोग बड़े इनसिक्योर होते हैं, स्पेशली, और हमारी इनसिक्योरिटीज हमारी बेगमें बड़ी देखती हैं. Did she knew what she was getting into? No, I don't think so. No. I think हाले आपे मत्ता जोगी मत केड़ा इसनु तो ये वाला हिसाब था. So we're both too young. I mean, and I mean not by age. I think also in terms of maturity. We look back, I was 24, 25 when I got married. Myra's the same age. She was 11 months younger. And you were working. The way did you guys meet? Myra and I met through her relative, her cousin, who was my friend. Achha. So that's how we first met. Okay. And didn't get along at all the first time. At all. So नफरत ही तो सबसे बड़ा प्यार होता है. मैं कहा पता नहीं कौन सड़ी सी औरत है. उस वक्त भी औरत सोचा था मैंने. ये मायरा तो नहीं देखेगी ना? सर देखेगी, बेफिक्र. एडिट नहीं करूँगा. फिर मुझे देख लेगी. अच्छा, देख लेंगे फिर. और उसके बाद शी वॉज थिंकिंग पता नहीं कौन सा लेक्चरस फ्लर्ट सा है. मैं शरीफ सा लड़का. Anyhow, but then I was attracted by her wisdom and her grace. That really got to me. And I was like, yeah, we became friends. We stayed in touch, helped each other out. और फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई. क्या बात है. ऐसा हुआ. ठीक है, फिर आपने वार कर दिया. हाँ, वो वार करती है.
आपको लगता है कि एक हस्बैंड का कैरेक्टर या एक फादर का कैरेक्टर, इनमें से कौन सा बेहतर निभा रहे हैं? मैं हाँ, I would like to believe, well, I mean, they're the ones who should be asked this question. नहीं मगर एक But एक्टर my हमेशा अपने आप को तो opinion, रेट करता है in मैं ये बड़ा अच्छा कर रहा हूँ यार. yes, yeah, बड़ी बड़ी अच्छी performance दी है. I would think I'm doing a better job as a father. I would think so. Not to say that I'm not doing a bad job as a husband. I'm like the husband one should have, and only one should have. जो इतनी छोटी वाइट टी शर्ट पहन के आ जाए वो तो जाहिर बात है हस्बैंड तो अच्छा हो गया. Yes. But yeah, I love my kids. Love them. Crazy. Fatherhood made you more humble. Yes. Fatherhood really made me more humble, and I think having Afia made me really gentle, super gentle. बिल्कुल ही पिघला दिया उसने. But Ryan was my savior. I was going through tough times in life when God gave me Ryan. And he saved me. And Afia's been Myra's savior. When Myra's been going through tough times, Afia's been the savior. And she's, so alhamdulillah. The two. Now he's 16 and my height wearing my bloody clothes. ये टी-शर्ट पता नहीं उसकी है मेरी है मैं पहन आया हूँ. So now वो दोस्त है. अब उसके साथ दोस्ती है. How important it is, especially एक एक्टर के लिए, क्योंकि हमारे वर्क आवर्स आर वेरी डिफरेंट. वी डोंट हैव अ 9 to 5 स्ट्रक्चर. 15 दिन हैं, 1.5 महीना नहीं है, एंड ऑल दैट. Do you think it is because the wife is holding the fort that you can do all of these things? Absolutely. And how do you take time out? Okay, how do you divide the time between your work and your... Do you bring your work home? There's no work to bring home except reading scripts. और वो भी कम मौका मिलता है. Except like right now, kids had gone to school. Myra had gone to school work as well. So this would be my time. कि मैं जो मैंने काम करने जितने मैं कर सकता हूँ कर लूँ. And if I really need to do it, तो हम लोगों के घर में there's this term that I had introduced. We call it INH. It means I'm not home. So INH, which really helped us in COVID. So Myra used that as well. Okay, INH, Amma nahi ghar pe. So just assume Amma's not at home, she's working, you know. So we used to do that as well. But it is taxing. मेरे लिए सबसे taxing ये है कि, and God bless Myra for holding the fort. I'm barely in Lahore, let alone home. I'm barely in Lahore. Why do you think winter से लेके अब तक we haven't been able to come here? और आज मैं जब आया हूँ मैंने कहा यार लाहौर क्या हो गया लाहौर को? And I'm not even in Lahore technically speaking. Wow. We're on that side of Lahore, right? Yeah. So, but I'm not even in Lahore, and she's holding the fort. We've made our new home. We've moved in there. Mashallah. And I think of the 8 months I've been there, collectively one. So So फिर ऐसे ਹੁੰਦਾ या तो ਤੁਸੀਂ स्टार बन सकते हो या फिर अब्बा बन सकते हो. star भी ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था. Oh, हाँ, Myra is the true star here. Sir, yes, बिल्कुल. Yes. So fatherhood भी आपने कर लिया, फिर अब आपने पिछले जो 10 सालों में आपके कैरेक्टर्स ने अपने आप को रीडिफाइन करना शुरू किया. और उसके अंदर एक बड़ा आला कैरेक्टर और एक आला प्ले आया जिसका नाम था संगे माँ. संगे माँ में आपने मेथड एक्टिंग, मतलब आई ऑलवेज न्यू यू वर एन एक्टर, मगर आपका मेथड एक्टिंग के ऊपर और एकदम ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया जिसका नाम था मस्तान सिंह, बड़ा नॉर्मली हमारे यहाँ एक तो पंजाबी वाला जो एलिमेंट होता है हम उसको कॉमेडी की साइड पे ले जाते हैं. दैट वाज अ वेरी शेडेड कैरेक्टर, मल्टीपल लेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड टू वर्क अगेंस्ट नोमान भाई अगेन एंड देन आतिफ वाज देयर. तो संगे माँ की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगा? बिकॉज उसके लिए तो फिर आपने बाल शाल दाढ़ी शाड़ी वो सब कुछ किया. I mean, you're a friend, and I can comfortably share on your podcast. My preparation for that was not in my hands. My preparation for that happened even before I picked up Sangema's script. God had created circumstances which really helped. I had gotten cancelled prior to this, and my family was going through turmoil. Serious turmoil, and I was attending to Myra and my kids. In the process मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मुझे भी जख्म लगे. मैं completely forgot कि यार मुझे भी बड़ा कुछ हुआ है, मुझ पे भी बड़ी नाम बातें हुई हैं. And I had not been attending. I was just attending my family, my house. मेरा घर was terrible situations. And I in that process, Sange Ma was the first project which physically removed me from Lahore, took me to Dadar. Away from everything. Away from me being me, Omair, and becoming Mastan Singh, and gave me an outlet. और इस प्रोसेस को, यानी कि ये प्रोसेस ये इस तरह शुरू हुआ.
जहाँ काम की बात है, हाँ, I like to grow my hair and beard whenever I can. It's like the, you know, हाँ, खर्चा बचाना. खर्चा बचाना. जब डैनियल्स कहते हैं कि I like to grow all my hair out before the next role, so उसके हिसाब से मैं शेयर करूँ जिस पे कोलबर्ट ने कहा था all your hair. So I like to do that, and I enjoy changing my look. I get bored very quickly. Yeah. So I did that, or I was preparing actually for a film character of Rumi. अच्छा. I had no clue कि ये होने वाला है मस्तान सिंह का. And I was in Karachi. I was talking to Kubra. गपशप हो रही थी. उसने कहा था वो. मैंने कहा हाँ, मुस्तफ़ा ने कहा था हो रहा. कहता no, they're picking it up and this is the story. I started reading it. Then I picked up, first time ever in my life. I'm not non-ambitious person, right? Yeah. First time ever in my life. I picked up the phone. I called Mustafa. मैंने कहा अफरीदी ये मस्तान सिंह मैंने करना है. You know, I want this character. And he said जानी तुम्हारे लिए लिखा है. बस ठीक है. तो I started preparing for it. I went back to, I mean, sort of ancestral, because वालिद साहब, मेरे जो वालिद साहब हैं मोहम्मद असलम राना, उनके वालिद साहब मेरे दादा खैरदीन राना, उनके वालिद साहब was called बाबा नानक. मुसलमान थे, लेकिन ननकाना साहिब से तो खैर काफ़ी दूर है, लेकिन this is डेरा बाबा नानक में, that's where my father was born. Yeah. And it's called डेरा बाबा नानक. So there was around the Sikhi, दुआबी है, चढ़दा पंजाब. So I went back to relearning Sikhi. Back to the roots. Yes, and I was like, let's learn more. And I went to Nankana Sahib. I spent time there, and I became one with that again. I really enjoyed it. जब वो outlet आया, character की, जो one thing I loved about मस्तान से, कि यार हक की बात करता था, हक की बात, सीने पे लेता था, मर जाता था, लेकिन हक की बात करता था, मर जाता था लड़ते लड़ते. And I took that on. I was like, I want to associate myself with that. I'll go down, but I'll stand by my grounds, you know, what I believe in, the values keeper. I at one night, and this is something that I haven't shared on any public forum, I on one night had a mental breakdown. While shooting? Yeah, well, typical, normal day था, and I'm, unlike today, I'm usually very punctual. So मैंने कहा ठीक है जी, कितने बजे काम? 8 बजे कॉल टाइम. ठीक है, तो मैंने सुबह 6 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, फजर की नमाज़ पढ़नी, 6 बजे उठ के मैंने हाइकिंग कर लेनी है, फिर मैंने अपने अंडे खुद फ्राई करके खाने हैं, जो भी. I'll do myself and I'll be ready, नहा धो के I'll be ready. Preparation थी, तो मैं जल्दी सो गया. And I नींद में I woke up wailing and crying. I had no clue what the hell was happening. And I did, because I'm an amateur student of psychology, मैंने कहा इस वक्त फिर ये बस just let it happen, let it purge. And I kept weeping and I kept crying. मैं फजर तक रोता रहा, जागता रहा, and I got exhausted. फिर एक दोस्त है, she's a counselor of sorts, तो उसको मैंने पूछा कि यार ये हुआ है. And I realized what over time कि हो क्या रहा है, मैंने जो सारा बैगेज आप लाहौर में छोड़ के आए थे. Yes, वो सारा जो मैंने अपने आप को अटेंड नहीं किया था ना, in terms of breakdown, mental breakdown में यही होता है कि the brain is saying, you know what, I found an opportunity, I'm going to do it myself. You're not paying attention to this. तो वो गुबार निकलता है, literally purge, and it purged. And that's when I started re-healing, you know, and I started discovering that. हमें एक फ़ायदा है जो हम लोग, I mean, it's a two-edged sword. People cannot appreciate, you can appreciate, we can appreciate as actors, people can't appreciate how taxing it is on a human being when they're an actor doing a genuine job. Yeah. It's not just the hours, it's not just the waiting, it's not just the conditions you're in, but the emotional journey. Yeah, you have to shift in and out. Yeah. कि यार लोग कहते हैं ना कि साइकोस्कोमैटिक, कि अगर आप बहुत सैड होंगे तो आपके जिस्म में कुछ बीमारी हो सकती है, whatever, things like that. Imagine doing that regularly. Imagine being funny all the time. Imagine being funny. It is so exhausting, right? The energy that it takes. People don't appreciate that. But the other edge is, उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे इतने अरसे से वो outlet भी नहीं मिल रहा था. Acting is also an opportunity for me to get my गुबार out. Yeah. कि मस्तान सिंह जब रो रहा है, असल में उमैर रो रहा है ना कहीं छुपा हुआ. बिल्कुल. So I get to do that. Or if I'm stabbing the knife somewhere thinking I want to get something, it's me purging. I never did it as Omair, but Mastan allowed me to do it. So for me, Mastan Singh was my rescuer. The reason why I still wear this is Mastan Singh. I just kept on doing that. कभी नहीं आता था. That was your closure. It became your closure. It became a closure. It became a symbol to refer to myself. Yeah. You know, कि यार भी मैं कित उन्हें मैंने बचाया. I had अम्मा and अब्बा passed away 3 साल की गैप में, और अभी अब्बा का मैं I think I didn't recuperate from that, और एकदम अम्मा passed away. अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए. मगर मुझे and suddenly ज़िंदगी में अज़ान आ गया, and तो मेरी complete attention मेरी बेटे की तरफ चली गई थी. कुछ 2.5 साल के बाद I had the same episode. There you go. और फातिमा was there.
और मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks. और मुझे नहीं समझ आई थी कि मैं इमोशनली इतना क्रिपल किस तरह हो सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फाउंड ह्यूमर इन थिंग्स टू लेवल माई सैनिटी, आई थिंक. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज के कितना इंपॉर्टेंट होता है टू एक्चुअली सिट डाउन, वेंट इट आउट. इफ यू कीप ऑन बैगिंग इट इन, एक टाइम आता है फट जाते हैं, आपको नहीं मतलब आता. और यहाँ हम लोग कहते हैं कि जी मर्द रोता नहीं, मर्द को रोना भी चाहिए, बिकॉज एम्पैथी आपके अंदर क्रिएट होती है, और उससे आपको रियलाइज होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर योर सैनिटी. Ahmed, I mean, diverging, but I want to ask you as well. Did you कभी लगा कि, I mean, I know I have done it. I've found hidden behind my humor. Have you felt maybe your humor was your tool to hide behind something? It was my defense mechanism. It still is. Because अगर कोई चीज़ मैं सीरियसली नहीं कह सकता, मैं ह्यूमर के जरिए कह देता हूँ, and people take it in that manner. But I use it as a weapon. But now at least you're aware of it. Yeah. I got aware of it in, I think, in my after theatre. मैंने वहाँ से theatre gave me that courage to say things जो मैं नहीं कह सकता. क्या बात है. Yeah. So we actors are very emotionally damaged people. Most of the actors I know. Yeah, no. Yeah. अगर कोई हलाल काम कर रहा है तो definitely होगा. This is my belief. बिल्कुल. The reason why I always talk about mental health. People, ये जो है ना stigma, वो काउंसलर को जा रहा है पागल है, hell with it. Everyone is abnormal. वाहिद शख्स जो नॉर्मल है ना, वो है जिसे आप अभी मिले नहीं है. और जो मिलने देना तुझे तानु पता लगता है, ओ तू भी मेरे मंगर है, तू भी आई है. So we all need to address that. Right. आपका political stance is very hush. You're not very मतलब मैंने नहीं आपको कभी देखा कि आपने बहुत ज़्यादा कोई political कोई टॉपिक लगाया हो, या do you believe कि पाकिस्तान is right now going through the worst phase? This is one of the most depressing moments of my life as a Pakistani. मेरी आइडेंटिटी एज पाकिस्तानी, अगेन ओवरसीज पाकिस्तानी था मैं, तो वो इट केम आयरॉनिकली फ्रॉम क्रिकेट. दैट्स व्हेन वी सॉ कि यार ये हमारे जवान हैं, एंड हमें कभी पाकिस्तान में कोई फ्लॉ नज़र ही नहीं आता था. बिल्कुल. एज ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं आता था. व्हेन वी मूव टू पाकिस्तान, तो मैं इधर उधर देखता, मुझे गुस्सा चढ़ता कि यार ये सारे पाकिस्तान को टॉक डाउन क्यों कर रहे हैं. हमारे मेरे मामू एंड बड़े सारे, व्हाई दे टॉकिंग डाउन. लाइट नहीं है, आई अंडरस्टैंड, इट्स टेरेबल, बट व्हाट द हेल. ऑब्वियसली जैसे जैसे शऊर आया तो थोड़ी रियलिज्म आया. सो क्या कहना चाहिए, फ्रॉम रोमांस इट वाज इवॉल्विंग टू लव. You know what I'm saying? So I could see the flaws of Pakistan, but I choose to accept it wholeheartedly. That's true love. Yeah. Recent जो most है ना, मेरी identity crisis हो गया मुझे, and I've been trying to rediscover that. कि यार, is this the Pakistan that I love? Is this the Qaed's Pakistan? You know, so when I saw this, I stopped for a moment. I feel guilty. I feel ashamed. I feel, sorry. And I think we've come down a long way on a long route, which is really deviated. मुझे issue ये नहीं है, मुझे major issue ये है, आगे नजर नहीं आ रहा. वो मुझे बहुत डर लगता है उससे कि यार, what the hell, man? Nothing. I don't see it. I see so much greed. I see so much fear. That these are the two of the greatest ills that I talk about. और वही हर जगह नजर आ रहा है. बीच में glimmers आते हैं. I mean, recently glimmer एक आ गया था मुझे social media पे. I wept when I saw a man weep. Yeah. I wept when I saw that. कि एक सफ़ेद पोश रो रहा है, और किस तरह रो रहा है, you know? And you got in touch with him also? I was lucky to find him. खुदा ने मदद की. I met him. I had a nice chat with him. बात की मैंने, and he was fine. खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह. But उसके इवज़, उसके आड़ में कितने लोग directly reached out to me, one way or the other. उसमें मुझे लगा, okay, वो एहसास अभी जिंदा है. So I was very happy to see that. So that was a glimmer. So I'm a fool. I'm going to keep looking at the glimmer. Yeah. I'm a fool. So I'm going to keep looking at the glimmer, but my foot is behind the crease, and that crease is reality. So I'm still scared about that. I think the best advice I got was from my wife. The way that you can actually make a difference is कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखना शुरू कर दो. We have हर एक के घर में 3-4 नौकर होते हैं, हर एक के घर में लोग होते हैं, जानने वाले होते हैं. बिल्कुल सही. आप उनका ख्याल रखना शुरू कर दें,
आहिस्ता आहिस्ता, भाई आप ये ना करें कि अच्छा यार मैं जाके ये करूँ वो करूँ, आप उनका ख्याल रखें, उनके साथ आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, उनकी स्पिरिचुअल हेल्प अगर उनको चाहिए, जो भी आप अगर अपने घर में ही उनको रखना शुरू कर देंगे, इवेंचुअली ऑटोमेटिकली अच्छाई खुद ही I फैलना शुरू हो completely agree जाएगी. with you. She's very wise. I'm glad we were lucky to have wise wives, man. Honestly, but Yes. yeah, we have to compete on this. Who's luckier? But that is true. नहीं नहीं. And real wisdom. और वही है कि it becomes overwhelming. जब आप पूरा बड़ा picture देखते हैं ना, it's really overwhelming. आप इस नाक की सीट में देखें, who is right under you? आपकी जिम्मेदारी में कौन है? And see if you can serve them. That's it. And again, rightly said, सिर्फ financial भी नहीं. Spend some time, listen to them. Hear them out. Let them know that there's an outlet. Because all these things lead to frustrations and anger and anxiety. Well, hear them out. We're the counselors. Just to listen. And you do that. आगे देखते हैं. आप अपना काम करें. This is the contribution you can make. Yeah. Just make that contribution unconditionally and move on. और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों. आमीन. Always. हर दफ़ा ऐसे कह रहे होते हैं. जाहिर बात है, कॉन्वर्सेशन तो मैं आपके साथ 2 घंटे भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सेंसर हो जाएगी. तो हम लोग अब कुछ That's very sensible of you. हम लोग कुछ एक्सक्यूज़ मी वाले सवालों पे आते हैं, जिनके अंदर आपने नहीं कहा कि आप ह्यूमर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. मैं वो अब करने लगा आपके साथ. मैं भी फिर अपना लालपुरिया कड्डा. तो ये कुछ थोड़े से बदतमीज सवाल होंगे. जितनी बदतमीजी से आप जवाब दे सकते हैं उतना ही ठीक है. मग सुट सकना ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ. ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਬਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ. Okay. ठीक है जी. ओके सर, सबसे चैलेंजिंग रोल मेरा कौन सा था? आपका? नहीं आपका. मुझे पता, आप मुझे बहुत ज्यादा देखते हैं, मुझे आपने फॉलो की स्टॉक करूं मैं आपका. सर मेरे दुबई वाले कमरे में आपने आके अवार्ड चोरी करने भी की कोशिश की थी. yes. वो रूम सर्विस ने आपको अंदर नहीं आने दिया. एग्जैक्टली. तो मैंने ग्लास कटर लिया था पर वो बाहर से भी नहीं आ सका. चैलेंजिंग रोल. मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल. मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल मैं करंटली कर रहा हूँ. मुझे हजम नहीं हो रहा. That's why it's challenging. I'm not satisfied. Physical transformation, yeah. No, the person and the person in the story, and वो story में big arc में इसका काम क्या है? What the hell what is he contributing to this story? तो फिर पैसों के लिए आप कर रहे हैं? Of course. वो फिर ठीक है. तो मैं कम से कम मान तो लिया ना. बस ठीक है. अच्छा, मैं सब तो फिक्का किरदार केड़ा सी. फिक्का किरदार हो जाए ना फिक्का एक्टर. हाँ. फिक्का किरदार जेड़ा हैगा सी ना, I think 3/3 is still that sore point for me. I wish I could do it again. And you would do it very differently. I would kick ass. Yeah. Bring it on. लेकिन अब 3/3 नहीं होगा. अब इतनी हो गई, 30/30 हो. अच्छा जी, किस अदाकार से मैंने कुछ सीखा? मैंने किस अदाकार से कुछ सीखा? मैंने एक्चुअली रुमान नजात से सीखा. I like the fact that how he keeps the energy of the place up. हाँ. I've always, and I found that was my mask. So when I was to feel uncomfortable, I became the comic self, like the clown on the set, the alter ego. the clown on the set, and that essentially it helped them, it kept their energy going, but they didn't realize I'm also doing it for a selfish intent. Right. I'm feeling more comfortable now, So जब नोमी भाई होते हैं set पे, I take the back seat. So because he's a bigger clown. ओहो भाई. अच्छा, मैं हैरान हूँ, नोमी भाई ने कॉमेडी नहीं की अभी तक, हालांकि अलग कर सकते हैं कॉमेडी. या BTS ही कर ले रिलीज. ओ तो सेंसर हो जाएंगे. मसा करके कैनेडियन नेशनैलिटी मिली. अच्छा जी, किस अदाकार को या अदाकारा को गाना गाना चाहिए? किस अदाकार को गाना गाना चाहिए? मैंने किसको सुना है? Who's done well? Who comes to my mind? नोमी भाई तो बड़ा पैड़ा गाने. नहीं, वो तो ना ही गए तो उनको तो पैसे देने चाहिए कि ना गए. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. I think मैंने किसको सुना है? जाले सरदी को सुना है. She sang well. She sings on a very high note pitch though. सरवत अच्छा गा लेती है. I don't think I've heard her sing. अच्छा, so I don't know. मैंने उसको कभी गुनगुनाते हुए सुना. I think she has a good voice. But I've heard many actors sing. जिनकी बल्कि सरवत से याद है, अभी आपने नूर
नूर आई थिंक द फिल्म did that और short वो film कैंस there. के लिए Cannes के लिए it won that award. Yeah, अरे वाह वाह, exactly did. yeah. She didn't sing. But yeah, I can't think of anyone right now. I know Sajal can hum well. I know that. But I can't think of a name. But मैंने वही recently note किया था कि जो और खास तौर पे जो theatre trained actors हैं ना, yeah, they have a good voice. And I took it for granted कि because they use the voice so well, Yeah. वो उतार चढ़ाव पकड़ लेते हैं. If nothing else, and again I'm quoting your great नानी. मुझे अभी तक याद है उनका quote. उन्होंने कहा जितना सुर ना होवे कोई मसला नहीं है. पर ये ताल सही ना हो ना जीवन दा हक नहीं है. हाय, बेताला ना होए बस. बेताला ना होवे, which I completely agree. Because यार ताल is the base you learn at the heartbeat in the womb of your mother. क्या तो ताल कैसे खराब हो सकती है? ये तो So anyhow. अच्छा जी, किस डायरेक्टर को अदाकारी करनी चाहिए? I think Iqbal Hussain we should act now. Yes, Iqbal ko he should come on screen. Yeah, कर लें अदाकारी. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ. ਹਾਂ ठीक है. अच्छा जी, नुमान इजाज का सेकंड करियर क्या होना चाहिए? अच्छा, ये नहीं कह सकता. ये नहीं कह सकता. उनका 8th करियर जो है ना प्रॉपर्टी सेल्समैन होना चाहिए. अरे वाह वाह, गड्डियां तो बेचते सी कि प्रॉपर्टी तो आज वाह वाह. वो कनाडा में बहुत बिजनेस होगा उनका. हाँ ये कैसे. अच्छा जी, सरद गिलानी शुड डू लेस ऑफ. Oh, Sarad Gilani should do less of what? I don't know. Less of traveling. It's making me jealous. हाँ, so Yes. ग्लोब ट्रॉटर है वो, ठीक है. माशाल्लाह. अच्छा जी, आतिफ असलम को सख्त ज़रूरत है. आतिफ असलम को सख्त ज़रूरत है. अब किस चीज़ की ज़रूरत है? आतिफ असलम को सख्त ज़रूरत है कि एक फैंटास्टिक इंटरनेशनल मूवी या फिल्म या सीरीज़ के ऊपर एक अच्छा सा ओरिजिनल म्यूजिक भेजे. अरे वाह, इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है. आई रियली थिंक सो. ब्रेक दैट बैरियर. या आई थिंक सो. ओके, आई विल नेवर. I will never tell you what I will never do. Yeah, you already done I it. did it. हाँ, हो सकता है. नहीं, I will never I will never lose my love for my people, the country. अरे क्या बात है, वाह वाह वाह. एक चीज जो मैं शायद ट्राई कर लूं. अगर सही लोग और सही जगह पे बैठा तो मैं शायद श्रूम्स ट्राई कर लूं. हाँ, वैसे मैंने भी नहीं कभी किया श्रूम्स. Yes. हाँ, आई हैव नेवर ट्राइड इट. इकट्ठे करते हैं फिर. हाँ, मगर वो मेरे ख्याल है इतने तो करेले मिलते ना. कौड़े करेले. मेरे बारे में कड़वा सच क्या है? मेरे बारे में कड़वा सच. कड़ेले कड़ेले. मेरे बारे में कड़वा सच ये है कि मुझे मिर्चों वाला खाना सख्त नहीं पसंद है. पैकअप डन. चलें, निकलें यहाँ से. लोग को मिर्चा ही नहीं खानी है. हाय हाय हाय, और सारा मिर्चा लाते रहते हो. ओके जी, ऑफ स्क्रीन मैंने फ्लर्ट किया है. हाँ किया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया. तो बनता है. बेगम काउंट होती है इसमें? जी, उसके साथ नहीं किया. जस्ट टू क्लैरिफाई. अच्छा जी, अगर कभी मैं हीरो बना. अगर मैं कभी हीरो बना तो उस वक्त बाल डाई हो चुके होंगे या फिर नहीं, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ. ओके सॉरी. मतलब चेक करें कितनी शिद्दत से आया हुआ कि मुझे कोई हीरो बना दे. कितनी शिद्दत से आया हुआ है. उफ तौबा. अगर मैं कभी हीरो बना, हाँ, तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? ओह, एज अप्रोप्रिएट. ये जवाब है मेरा. एज अप्रोप्रिएट नहीं, कोई नाम भी होना चाहिए. यार आई ऑनेस्टली डोंट नो. इसका तो मेरे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तो ख्वाहिश ही होगी कि हम इवॉल्व ऐसा करें एज अ स्टोरी कि salt and pepper hair kind of person can be a protagonist, and the story can be about anyone. You know, it's someone going through midlife crisis, someone who is romancing at this age. I don't know, whatever the case may be. चलो, ये तो हो गया ना everything depends on करेक्ट सवाल. अब बताएं कौन सी हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ. माधुरी चलेगी माँ के किरदार में. मतलब आप मैं हीरोइन की बात से माधुरी आ. अब वैसे मैं मोनिका बेलुची भी सोच रहा था, बट मैंने आपने माधुरी शूट डाउन कर दी तो आई वाज टेस्टिंग वाटर्स. मोनिका बेलुची के साथ मोनिका बेलुची हो सकता है, बेलुची का नहीं पता. अच्छा जी, कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ शायद आगे काम ना करना चाहें? शायद काम ना करना चाहूँ. I don't know.
I can't think of one. राजू शायद इतना अरसा हो कि उनके साथ नहीं किया इसलिए याद ही नहीं आ रहे. वो काम ही नहीं करना चाहते. नहीं मगर आई एम श्योर कोई कोई तो ऐसा होगा. नहीं है ऐसे डायरेक्टर्स आए हैं. I'd been very disappointed. I don't know. जो डायरेक्ट ही नहीं कर रहे, you know, सबसे बड़ी बात वही नहीं है. और too busy in the mole cells के प्रोजेक्ट में नहीं है या मुझ में नहीं और कैरेक्टर में नहीं. I can't recall right now. मुझे हमारी इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात क्या लगती है? The oligopoly, the cartel. I don't like that. वो तो है. I don't like it. I think ये that जो प्रोडक्शन हाउसेस की है, Yes. हाँ ये तो है. I think this cartel needs to, or rather, the lack of enterprise by the cartel. Enterprise होना I don't mind. कि यार आप दूरंदेश चीज सोच रहे हैं, आप इंडस्ट्री का ग्रोथ सोच रहे हैं. नहीं, ट्रेडर माइंडसेट है, उस पर मुझे बहुत मायूसी होती है. और वो होता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो अगले का नहीं करेंगे. ये भी है. और कार्टेल में फिर ये है कि यार हमने बस ये सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाया उसको बेच दिया बस, दैट्स इट. एन एंटरप्राइज वुड थिंक कि अच्छा मैंने 15 साल में यहाँ पहुँचना है, हाउ कैन आई ग्रो द इंडस्ट्री सो दैट आई गेट अ बिगर पीस ऑफ द पाई. ये नहीं सोच रहे, तो कलेक्टिवली सोच लें 3-4 बिग हेड्स, शुड बी बेटर. मेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है? यार गोडे इथे, हाँ थोड़ा सा यहाँ भी. सो बट मैं गया हूँ कल डॉक्टर के पास, सरकार मेरा गोडा इसके मेरे गोडे नवे पवा दो. हाँ पा दो. बलालगंज जो आना मैं. थिएटर या टेलीविजन? थिएटर. ऑलवेज, ऑफ कोर्स. अगर किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर बायोपिक बनी तो किस पॉलिटिशियन को प्ले करना चाहेंगे? मैं एक करंटली शूट कर रहा हूँ जिसकी इंस्पिरेशन एक पॉलिटिकल पर्सन है, उनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आप फॉलो करेंगे, आपको अंदाजा शायद हो जाएगा यार मैं खाना यदि गल कर रहा सी ताई विलन बने हैं. But I would like to do as a political figure, I would really like to get into the head of a political figure of, I mean, Jinnah would be definitely one. I would really like to understand what's happening. But if you really ask me political figure, it would be Bhagat Singh. Oh. I would really like to get into that character. Oh wow. That'll be I can actually see you play that. I'd love that. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने लर्न की. Learn? हाँ. In my whole career, what have I learned? I think the biggest thing that I learned, and again this happened during Hajj, everything comes down to intent. And I have to keep struggling to make sure my intent is shifted, not from getting, but unconditional giving. And that essentially means कि जब मैंने generous होना appropriate है तब generous हूँ, और जब मैंने courage दिखानी appropriate है तब मैंने courageous होना है, और बिला किसी लालच के. So shifting my intent from getting to unconditional giving is one of the biggest things I've learned. And last, Omair Rana legacy is? My legacy is my children, honestly. I hope that I raise 2 good human beings who can probably make this world a little better place than the shittier place that we're leaving for them. राणा साहब, कैंटी बज गई है. कैंटी बज मैं गई कोई गलत नहीं, कि सियासत गलत मेरा नहीं ख्याल है. कोई गड्डी तो नहीं आई बाहर? को डाला तो नहीं पिया. Sir, I've always been a fan. And Ditto, man. you Ditto. have always been an inspiration. Your work has always been an inspiration. Ditto. और मैं हमेशा कहता हूँ कि I've been blessed to be surrounded by so many talented people. Out of that, you are one of them. And I've always seen you from theater to television to films, and you are destined for greatness. Oh, no, well, And thank you so much for taking time out. Buddy, thanks a lot. And I must say this before going off. You're one of those people that I regret not spending enough time with. You know what I'm saying? I want to spend more time with people like you particularly. Because again, we've come from a long way. And Yeah. from the times of God knows when. ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੜਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਪੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ. 4-4 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਗੁੱਡ ਡੇਜ਼. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ. Exactly. ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾ. But because I've witnessed your growth as an individual and as a couple and as a family from a distance, it's always been admiration. Okay. I've always envied you, mashallah, for the great self-defense mechanism that you've always had. Yeah. The confidence, the comedy. लेकिन एक चीज जो which I'm gonna say, you can edit it out if you want. It is, I've grown to learn the importance and the significance of an individual who creates his own shadow.
and comes out of bigger shadows that they've had. If you know what I'm saying? Yeah. यार अपनी शनाख्त बनाना बहुत मुश्किल काम है, हाँ जी, और बेशक। जब आपका इतना खूबसूरत साया हो बड़ा हाँ जी। आपके ऊपर, उसमें अपनी शनाख्त बनाना, it's a totally different thing. And for me to witness you to do it as one of the admirations. So I've generally been regretting not being able to come here, smoke a cigar with you. But I promise. काफी इमोशनल बातें हो गई है उसके साथ ही See, defense mechanism kicking. ये डिफेंस में, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं ना तो हम उसको कॉमेडी में ले जाते हैं। Yes. लेकिन थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। Always, buddy. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो अपने इर्द गिर्द के लोग जो है उनका भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।